Alright children, welcome to amazing Aakash BYJU'S NEET channel, your own channel for your amazing and very successful NEET journey. I am Dr. Pankhuri Ma'am, your biology teacher. You meet me every Tuesday and Thursday. When we study, we are currently doing the unit of ecology and we are on the very first chapter of Organism and Population. Now people, ecology is very important, carries almost the maximum weightage in your entire class 12 syllabus for both boards and NEET. So please be regular to these classes, stay tuned to the channel, subscribe to this channel if you're new to the class, like the sessions as you watch them and share them with everybody. Everybody who wants to gain knowledge and good content, you should share these sessions. Yeah, like I always tell you, download the Aakash BYJU'S app, explore it for free of cost, 14 days, for 2 weeks. Explore all the wonderful features of this app, which includes the video libraries, the skull crusher questions, the previous year questions and whatnot. Yeah? Now people, talking about what we did in the last class, those of you who are coming after a long time, we have come to a place in ecology where we spoke about how living organisms, if we talk about the hierarchy of ecology, the basic unit is the species or the organism itself, right? Now at any given point of time, like I always say, organism is interacting with other organisms, not necessarily of its own species, and also the physical environment. Now, when we talk about the interaction with other species, we will talk about that in population interactions, because we are not one single individual, right? We stay in a group, in a population. We've already studied what is a population. But right now we are talking about how we respond to the physical or the inanimate environment. Very important topic. Last class, we spoke about it with the help of a beautiful graph and the example of, remember, how many of you remember, write it in the comment section, where we, with the help of animations, with the help of very high level of visuals, we saw how a marine fish and a freshwater fish tries to maintain the osmoregulation part. And then there are regulators, complete regulators like us, who maintain both constant temperature and osmolarity at any given point of time. But most of the animals, most of the organisms, and most of the plants are conformers. Their body temperature is according to the environment, isn't it? Now today we are going to talk about something else. Okay, so if organisms are living in an environment, they're responding to the environment. See, I told you in the last class that organisms would want to survive and reproduce because they know these two criteria have to be fulfilled in order to be a successful species on this planet. Yes, so conformers, for example, what will they do? Regulators can stay anywhere, but what will conformers do if the environment suddenly becomes very harsh? So now comes a sort of a response, another response. We study these responses, the headline being the suspension in response to adverse conditions. Let me change the pen. In response to the adversities. So for a conformer, when the environmental conditions become very bad, okay, and the organism cannot conform, then what he chooses is suspension of the physiological, biochemical activities. Okay, suspension of the normal activities of the body, suspension of biological activities, which means biological activity means the activities to stay living. And what are they? How do we stay living? I don't need to tell you. You have studied the features of living organisms. Majorly, the metabolic processes, the physiological processes and the biochemical processes. Classic example is what we've been studying since junior classes. Think about it. This suspension can be either behavioral. The organism will change its behavior. Behavior in the sense how he goes to collect food. What part of the day does he function? Does it function? Also, it can be physiological. It can be physiological. So, think about the thick-walled spores. This suspension activity has been followed by the simplest of organisms, the monerans.
Bacteria form thick-walled spores. In normal conditions, when the conditions are favorable, they undergo fission. But when the conditions are bad, they also know a single prokaryotic cell which doesn't even have a good metabolic machinery, cellular machinery. It also tries to survive and makes thick-walled spores. What does that have? In the spore, it is going to suspend itself, suspend the activities, or remain dormant. Okay, so under suspension, we have these kind of methods to ward off, to escape the, remember the keyword, unfavorable conditions. So basically, you try your best to deal with a situation which is not favorable. You're like, okay, I'm going to be strong, I have all the strength and valor, and I'm going to fight it. But when it becomes beyond the fight, what is the next thing? You're like, okay, fine. I'll just go somewhere else. Yeah, this fight is not resolving. Let me just go somewhere else. So now I'm escaping. One more keyword is escaping. Escape is a very, very good. So suspension is temporary, children. You have to understand that regulation, confirmation, partial regulation responses, which we studied in the last class, were permanent responses. That is how the organism functions. But the suspension of activities, of biological activities, is a temporary escape in time. When the conditions are favorable, this organism will return to the environment. Okay? So the first one, I know you've been hearing about these responses in junior classes as well, isn't it? So the first one is hibernation, which is simply called the winter sleep. Winter sleep, isn't it? So it is seen in polar bear, which lives in extreme low temperature conditions. Very, and there's no food, there's no vegetation in those areas. So what will the polar bear eat? Yeah, there are no much organisms. How will he survive? So he knows that it is a temporary condition. He goes for winter sleep, where his metabolism will be extremely slow. So his metabolic needs will be slow. Okay, and hence so much of fat deposition also. So there is period of inactivity and reduced metabolism to pass the temporary harsh winter conditions. Yeah, what are the features of hibernation? Think about it. How can he save energy? He just sleeps. He's not running, he's not walking, because any activity in the body will require energy. So there is minimal activity. Simply breathing, that also at a very slow rate. Slow metabolic rate. All the metabolic activities of the body. Low body temperature. Because in order to keep a high body temperature or the optimal temperature, I'll again need energy. And there is slow breathing, like I told you. Okay. Then comes aestivation. Aestivation is summer sleep. This is a very common question that they ask. Aestivation, children, is summer sleep. So now the same organism who's facing harsh summers is trying to remain in a suspension, in a sleepy condition. It is seen in how to ward off the dry summers, because the organism doesn't have water, doesn't have resources. It is seen in snails. It is seen in frogs. Yeah, so they form a space in the ground and they have a mucilaginous covering, and they're not very active during the summer sleep. Okay, this you can easily see. Frogs, you will never see frogs in harsh summers. They will only come out when it is rainy season. Then they are everywhere. Why? Because they are laying dormant in the ground. Okay, they are laying dormant. They will hide in the soil for a little bit of coolness. And they will not be very active. Is that clear? Then comes diapause. Diapause, the name itself has the pause. Here what happens is, it is seen in fresh water. Zooplanktons. यानी कि जो लेक्स और पॉन्ड्स में मिलते हैं, हाँ वहां पे तो फ्रेश वाटर होता है, ये अपनी बॉडी को डेवलपमेंट ही नहीं करवाते. तो सस्पेंशन में व्हेन आई से कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सस्पेंड हो जाती हैं, वो तो सही था, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म एक स्टेप दूर जा रहा है. ये बोल रहा है मैं डेवलप ही नहीं करूंगा, मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा. Okay, so suspension also involves diapause, which is suspended development of the body. तो ये लावा स्टेज में पड़ा रहेगा.
ये लावा स्टेज में पढ़ा रहेगा. सस्पेंडेड डेवलपमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीन इन फ्रेश वाटर जू प्लैंक्टन्स. आर वी गुड हियर? अब ऐसा ही मैकेनिज्म देखा जाता है, बिकॉज प्लांट्स भी कन्फर्मर्स है ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स भी कन्फर्मर्स हैं. तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जिनका मैं एग्जांपल दे रही थी, मोनेरा का, फंगस का, लोअर प्लांट्स का, एल्गे का, फॉर एग्जांपल लोअर प्लांट्स की बात करूं. अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे मैम फंगस कौन सा प्लांट्स है? डोंट टेक इट लिटरली. व्हाट वी मीन इज अदर किंगडम्स, द लोअर ऑर्गेनिजम्स. व्हाट डू दे डू? बैक्टीरियल स्पोर्स. याद करो, जिसने मेरे साथ किंगडम फंगस, किंगडम माइकोटा पढ़ी है, फंगस इज ऑल अबाउट स्पोर्स. Exogenous spores, endogenous spores. In fact, I tell you, these lower organisms ना बेटा, they undergo sexual reproduction. जैसे algae में भी या fungus में भी, when they know कि conditions unfavorable होने वाली हैं, तो तब जो ये spores बनाते हैं, those are mostly because the organism wants to survive. Otherwise, these organisms are happy undergoing asexual reproduction. इतना आप दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध दीजिए. ओके, सो बैक्टीरिया भी फिजन करेगा, लाइक आई सेड अर्लियर. बैक्टीरियल स्पोर्स, हाँ, ब्रायोफाइट्स, मॉसेस प्रोड्यूस स्पोर्स, इजंट इट? उसके बाद फंगल स्पोर्स, तो कितने ही है. एसेक्सुअल स्पोर्स अलग है, सेक्सुअल स्पोर्स अलग हैं. एसेक्सुअल स्पोर्स में आप देखो स्पोरांजियोस्पोर्स हैं, जू स्पोर्स हैं, कोनिडिया हैं. फिर सेक्सुअल स्पोर्स में एस्कोस्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर्स हैं. ओके, उसी तरह एल्गे में भी स्पोर्स होती हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? द ऑर्गेनिज्म इज नॉट डाइंग बिकॉज द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन. इट विल मेक श्योर दैट आई कीप रिप्रोड्यूसिंग, बट एट द राइट टाइम. इवन दीज ऑर्गेनिजम्स नो द वैल्यू ऑफ द राइट टाइम. Okay, so this is how they are able to survive long. They are able to become resistant of the temperature and the resource limitations and the whatever factor affects an organism. It could be moisture for fungus. So they germinate only under suitable conditions. फिर plants में, higher plants में क्या ही बात करें. higher plants में तो कितनी buds होती हैं. आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस पढ़ी है. उसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिनेशन. व्हाट इज पेरिनेशन? इट इज सीन इन केस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स. अंडरग्राउंड स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल, you have the rhizome, you have the tubers, you have the corm, you have the bulb, and if I talk about buds yaar, bulbils, what are these? These are buds, fleshy buds. So now plant keeps these buds all the time. And what is perennation? Underground stem really helps the plant in a process called as perennation. So whenever the conditions are very bad for the aerial organs of the plant, जो हवा में है stem, जो हवा में है लीफ, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे क्योंकि टेम्परेचर या तो बहुत लो है या बहुत हाई है, ऑप्टिमल नहीं है, या सॉइल में पानी ही नहीं है, सूखा पड़ गया, या प्लांट के पास क्लोरोफिल ही नहीं है. तो एरियल पार्ट्स विल डाई कंप्लीटली. आप देखो एक्सट्रीम समर में दिखता ही नहीं है कुछ अगर आप जाओ इन सम एरिड रीजन्स ऑफ द कंट्री. लेकिन कम रेनी सीजन, बेटर सीजन, and the trees are back. How is that possible? क्योंकि soil के नीचे these underground stems, the tubers and rhizomes, were staying in a condition of dormancy. Dormancy is the most intelligent decision which has been taken by the plant, whether it is a bud dormancy, whether it is seed dormancy, whether it is a vegetative organ dormancy. You understand? Because the plant knows that ये कभी भी हो सकता है. That external environment is not in my favor. और seed dormancy तो बहुत ही जरूरी है. Abscisic acid makes sure कि normal life cycle, normal process में भी, in fact this is why angiosperms are successful.
सीड डोमेंसी, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स, तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी. ओके, सो नॉर्मली ऑल्सो सीड डोमेंसी एब्सिसिक एसिड क्यों बना के रखता है कि एम्ब्रियो को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका 9 months का जेस्टेशन पीरियड होना ही चाहिए फॉर द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप, उसी तरह प्लांट को सीड डोमेंसी वाला पीरियड चाहिए फॉर द एम्ब्रियो टू डेवलप. और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो एबीए सिक्रीट होता रहेगा, सीड डोमेंसी प्रोलॉन्ग होती रहेगी. स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, क्लास 11th. या तो इसी वजह से ये इतना इनहैंस्ड है प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. उस चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था. फॉर एग्जाम्पल डेट पाम विच इज फीनिक्स डिक्टाइलीफेरा का सीड मिला, 2000 पुराना सीड डोमेंट विच इज स्टिल वाइबल. इट कैन गिव राइज टू द न्यू डेट पाम. और ये हमें कैसे मिला? किंग हेरोड्स पैलेस डेड सी के पास 2000 साल तक डोमेंसी में रहा. सो दिस इज द पावर ऑफ determination of the organism to adapt, to respond. Okay? अच्छा, इसी में ही one is this that I give up. जैसे कोरोना हुआ, जब when the COVID war started, this problem started, first we tried to respond to the virus. देख भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं. How much our body's immunity can fight off this virus. आया. Now, when that didn't happen, when the consequences were grave, when death started happening, तो हमने क्या किया? We suspended ourselves. हमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया. We restricted our activity. So that is suspension. Now, when suspension is also not working, I cannot hibernate, I cannot sit at home, the virus is getting into the home. वैसे तो ये वायरस हर जगह था, but in other ways, go to a place where the cases are less. कुछ लोगों ने migrate करना शुरू कर दिया था. Okay? So another thing is that geographical location को change किया जाए भाई. Migration. और ये birds में बहुत ज़्यादा देखा जाता है. कई lower organisms में देखा जाता है, but most enhanced तरीके से birds में देखा जाता है. They can migrate over huge distances. Huge distances. For example, हमारे ही देश में खिलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, वहां पर साइबेरियन क्रेन आता है विंटर्स में. So these birds often travel from north to south direction to ward off the extreme winters. Yeah, and they know about it. They know about it. I told you the length of the light duration. Remember when I told you कि light से कैसे organism sensitive होता है? It is the duration of the darkness and the daytime. आया समझ में? तो उसी तरह से ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. The longest distance covered by the bird in migration. It is covered by the mighty Arctic tern. Has the longest distance migration of any bird. ये 30,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है. Extreme opposite, Arctic to Antarctic region. 30,000 किलोमीटर. long flight in order to ward off the unfavorable condition. अब सवाल ये आता है कि ये birds इतनी देर तक कैसे सह लेते हैं माइग्रेट करना. या हमने पढ़ा सस्पेंशन, राइट, कि ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट करने को तैयार है, whether it is winter sleep or summer sleep. So how does it happen? These organisms develop adaptation in the course of evolution. तो सर्वाइवल के लिए जब भी मैं एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगी, एनवायरनमेंट मेरी बात नहीं सुन रही है, वो चेंज होगी. अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू चेंज सर्टन एट्रीब्यूट्स ऑफ माई बॉडी. So that attribute which I'm going to change can be a morphological attribute, यानी कि body structure. Morphology बोले तो physical structure of the body. It can be a physiological attribute, यानी कि body की functioning.
फंक्शनिंग में सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, खाना खाना, रेस्पिरेशन करना, सर्कुलेशन करना, एनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, आई कैन ऑप्टिमाइज इट. This is adaptation is just optimization. Okay? Being smart with the given environmental condition. And the third is we change the behavior. Same thing. Now, certain adaptations are going to be genetic. जैसे short neck और long neck जिराफ की बात हुई थी. They were short-necked. They were short-legged. But फिर जब उनको खाना मिलना बंद हुआ, they could not reach the tall trees. Okay, so they started stretching their body. और धीरे धीरे we got a new species. So certain, देखो morphological, physiological, behavioral attribute of an organism which will increase its fitness. This word, मैंने last class में भी तुम्हें बताया था, whenever the word fitness comes into picture in ecology, it simply means survival to the given environmental condition and reproductive potential, reproduction. समझ में आया? So, adaptation can be passed on as traits, यानी कि they can be genetic or they can be epigenetic. Ma'am, what is epigenetic? Which is not passed on as a trait to the future generation, but it helps the present generation to adapt. Is that clear? अब ये adaptations बच्चों इतनी सारी हैं दुनिया में. If there is something that is always present is adaptation. Every organism, मैं तुम्हें बताऊं, is adapting constantly. And that is related to evolution also. Okay? तो कुछ adaptations हम पढ़ेंगे, सारी तो पढ़नी possible ही नहीं है. For example, हम simple से start करेंगे, जो हम सबको पता है. For example, we see the cacti, the opuntia. Yeah? Why are they this way? Why are they look like this? Why do they have this very spiny structure that, we are like, okay, we don't want to go near a cactus. Or it has a very thick structure, जिसको अगर आपने काटा तो उसमें से sap comes out. Because cactus in the course of evolution realized कि अगर मुझे deserts में रहना है, arid regions में रहना है, then I have to be a drought survivor, drought evader. There are evaders and there are endurers. Okay? So drought avoider. Okay? So I cannot be short-lived. I cannot be ephemeral. So it developed mechanisms or adaptations to fight it off. जो आप क्लास 11th में अच्छे से adaptation, मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया है, the modifications in the vegetative parts, root, stem and leaf. And I told you, I think zillion times, कि ये modifications कोई ऐसे ही सुंदर दिखने के लिए नहीं हो रही हैं, कि प्लांट के पास कुछ नहीं था करने के लिए तो उसने स्टोलॉन बना दिए, रनर बना दिए, conical roots बना दी, napiform. Nope. Chiefly adaptation. The plant is trying its best to survive through adaptations. Adaptations are a means to survive on the planet. If an organism cannot develop adaptations, it'll perish. It'll perish. It's like updating the software of the laptop or the phone. Okay? So we'll see the adaptation. जैसे कि North American deserts. North American deserts, southwest of USA, in fact. There we find kangaroo rat. ये एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि ये जो छोटा सा कैंगरू रैट है, it excretes solid urine. यानी कि पेलेट्स में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है. ऐसा क्यों हुआ? वो डेजर्ट में रह रहा है, उसके पास पानी नहीं है, तो उसने रेस्पिरेशन से
आप पढ़ते हो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. You know what metabolic water is. So this organism with the help of fatty acid oxidation, क्योंकि इसके पास ये कैमल में भी होता है मेटाबॉलिक वाटर, द हम्प, उसी तरह कैंगरू रैट में मेटाबॉलिक वाटर विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से ये जिंदा रहता है. ये बाहर से पानी नहीं रहता बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट्स. और ये अपना पानी एक्सक्रीशन में भी वेस्ट नहीं करता. So it passes very concentrated uric acid pellets called as the solid urine. ये इसका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का. People like, share the session because you love Aakash BYJU'S NEET. And if you're new to the channel, subscribe to the channel and hit the notification button because you don't want to miss any classes. उसके बाद ये थी फिजियोलॉजिकल. आप देखो कैक्टस में वापस जाते हैं कैक्टस के पास. यहीं पे बता देती हूं मैं. कैक्टस में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो रही है. मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो रही है. सबसे पहले स्पाइन इज अ लीफ मॉडिफिकेशन. लीफ ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं बन जाऊंगा कांटे. इतना टफ डिसीजन लीफ ने क्यों लिया भाई? क्योंकि लीफ पे जो स्टोमेटा है उन्हीं के थ्रू तो ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस होता है. Cannot afford. उसके बाद लीफ ने कहा भाई अगर मैं स्पाइन बन रहा हूं तो मेरा काम कोई कर लो, फोटोसिंथेसिस कर लो. तो वो किया स्टेम ने. सो स्टेम की मॉडिफिकेशन क्लास 11th. अगर आप लोगों को ये चैप्टर मुझसे पढ़ना है, इट इज देयर इन द प्लेलिस्ट. आई हैव टॉट दिस चैप्टर इन द वन शॉट सीरीज दैट हैपेंड इन आकाश बायजूस नीट. ओके, सो यू कैन रिवाइज दैट चैप्टर. तो स्टेम ने अपने आप को फिलोक्लेड में चेंज कर लिया. और यही चैप्टर सैटरडे को जो मैराथन सीरीज है हमारे नीट 2022 के बच्चों के लिए, उसमें भी मैं दोबारा पढ़ा रही हूं, बोथ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. इज दैट क्लियर? सो स्टेम में भी बच्चों 10 जुलाई को भी आकाश बायजूस का मॉक टेस्ट है. प्लीज डोंट मिस इट. डोंट थिंक आई एम 2023 एस्पिरेंट तो मुझे काहे देना है. It is very, very, very crucial to face as many mock tests as you can earlier in your preparation than later. It becomes very regretful later when you realize यार मुझे और टेस्ट देने चाहिए थे, मुझे और ज्यादा कंपटीशन को फेस करना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ. तो 10 जुलाई के मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कीजिए. एनालिसिस जैसे 4 जुलाई को हुआ था उसी तरह 11 जुलाई को एनालिसिस होगा पूरे पेपर का विद योर टीचर्स. तो अपने को वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता लगेगा. और उससे ज्यादा बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती. वही तो चाहिए हमें अपनी नीट प्रिपरेशन में कि हमें कोई बताए विच कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, विच आर वीक, विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो उस मैराथन सीरीज में मैं ये पढ़ाऊंगी सारी मॉडिफिकेशंस विद एग्जांपल्स. डू अटेंड दैट. तुम्हारी 11th निकल जाएगी. मुझे जो तुम मैसेज करते हो मैम 11th, it is happening. You just have to plug in. प्लग इन ही नहीं करोगे तो कैसे होगा ना भाई. क्लास तो देखनी पड़ेगी ना, मैम तो पढ़ा सकती हैं. ठीक है, तो ये हो गया जी मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन. फिर कैंगरू रैट ने अपनी फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करी. बोला यार ठीक है, गर्मी है ना, ड्राई एनवायरमेंट है, पानी नहीं है ना, मैं अपने फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन में आ गया ना चेंज, एक्सक्रीशन में अच्छा ये सारे प्रोसेसेस तो इंटर रिलेटेड होते हैं, इतना तो हम जानते हैं. तो एक्सक्रीशन में आ गया चेंज. अब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन किसने करी? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हमारी करी डेजर्ट लिजर्ड ने, चिपकली ने. डेजर्ट लिजर्ड क्या करती है? दिन में आराम से धूप सेकती है, जैसे क्रोकोडाइल्स का एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में. उसके बाद ये शाम को थोड़े टाइम बाद शैडो में चली जाती है, ऐसे पत्थरों के पीछे छुप जाती है बिकॉज इट कैन नॉट टेक सच हाई टेम्परेचर. वो बॉडी की हीट को कंजर्व करती है. एंड दिस इज अ बिहेवियर. इट इज नॉट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, इट इज नॉट चेंजिंग द फिजियोलॉजी, इट इज जस्ट चेंजिंग द बिहेवियर. ओके, सो रिमेंबर इन प्लांट्स the major scare off is of transpiration, loss of water. And we saw कि loss of water के लिए क्या morphological adaptation plants करते हैं. अच्छा, उसके अलावा डेजर्ट एनवायरनमेंट में आपको sunken stomata भी मिलेंगे.
This is also morphological adaptation, anatomical rather, to be very precise. Stomata अपर एपिडर्मिस पे ना होकर लोअर पे होते हैं, और इसमें भी क्या होगा कि स्टोमेटा विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस. स्टोमेटा वैसे तो एपिडर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन दे विल बी प्रेजेंट इन द डीपर लेयर्स कॉल्ड एज द sunken stomata. Called as the sunken stomata. Is that clear? उसके बाद हमने ये देखा है कैम मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में टू ईज आउट ट्रांसपिरेशन. ये भी एरिड रीजन ज़ेरोफाइट्स का अडेप्टेशन है. क्लास 11th में आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में. तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फिक्सेशन के लिए द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड नॉट ड्यूरिंग द डे. वो सारे का सारा मैकेनिज्म क्या है? अडेप्टेशन ही है ना. वरना प्लांट नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करता रहेगा और दिन में तो पानी का लॉस इतना हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करने के लिए पानी नहीं होगा. अल्टीमेटली इट इज खलास. उसके बाद आता है अडेप्टेशंस फॉर द कोल्डर रीजन्स. तो ये मैं आपको काफी टाइम से बता रही हूँ. यू नो, वी स्टार्टेड विद व्हेन वी स्पोक अबाउट टेम्परेचर. अभी तक हमने हाई टेम्परेचर की बात करी. इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो फॉर वेरी कोल्ड रीजन्स, these organisms will store a lot of fat in their body. Will store a lot of fat in their body. तो ये मोटे मोटे क्यूट क्यूट होते हैं. Think about the polar bear. Why? Because polar bear का specifically क्या है? They have to again get all the energy from the stored fat in the body. हाँ. और Allen's rule मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था. Allen gave a rule. He said कि in colder climates, you will always find animals with very small extremities. Very, very important question. This is also a adaptation. He said it has happened over the years. कि organism को पता लगा कि survive करने के लिए the extremities of the body, ear, tail, mouth, nose, they cannot be big. Because if they are large, then heat loss will be more. So extremities of these organisms which are found in polar regions are small, and that is an adaptation. It happens over millions of years. अगर मैं पानी की बात करूं, if aquatic mammals की बात करूं, terrestrial की बात कर ली हमने, polar bear की बात कर ली. If you talk about seal, blubber, again, I told you, blubber is again for insulation because she is found in extremely cold waters. Is that clear, people? फिर उसके बाद अगर प्लांट्स की बात करें तो हमने प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था. हमने ये देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी वेल अडेप्टेड टू ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस. देखो यार, xerophytic conditions are of two types. First xerophytic condition is कि soil में पानी है ही नहीं. सुनो ध्यान से बात. I'm telling you something important. Xerophytic condition is of two types. या तो organism के पास पानी है ही नहीं soil में, plant के पास, या फिर पानी में soil तो है लेकिन it is extremely saline, very very salt rich, concentrated है. That is also xerophytic condition. Okay? So, gymnosperms कैसे उसको evade करते हैं? Right? Sunken stomata is one thing. And the biggest thing is they have conifers, if you look at them. They have needle-like leaves. And the excurrent habit. Needle-like leaves मतलब जो snow है, it will not stay on the leaves. They're always like this. And the surface area of transpiration is reduced a lot. Spine नहीं बने हैं वो. Cactus की तरह spine नहीं बने. But they are needle-like to ease out transpiration and so that snow does not collect on them. Alright? So these are the adaptation for plants. Is that clear, people? So this was it from my side for today.
we have learned the adaptations that are seen in organisms against various conditions. अब हम बात करेंगे population level पर. हमने बात कर ली कि organism कैसे जिंदा रहता है, organism के लिए क्या होता है as a single organism. लेकिन ये तो मेरी बातचीत है physical environment के साथ. At any given point of time, I have to interact with the other species also, and that comes under population. So we'll understand, जब हम population ecology समझते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा genetics के बारे में भी समझ में आता है. They are both related. So genetics and ecology are never understood at the level of a single organism. It is always understood at the level of population or community, at least. Okay, so I'll see you in the next class. I hope you had a lovely session. Keep smiling and take care of yourself.